Hey, hi guys. Welcome back to the live session series and आज हमारा day 11 है. Uh, एक एक दिन करके I think we are moving ahead and every day is a new day and I think we are learning a lot. I am learning a lot in terms of how to show up and how to schedule this every day. Talking about some things. अभी हम 2 दिन से book sessions के बारे में discuss कर रहे हैं. Books के बारे में like things which have taught me best. I'm trying to bring that up and हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. And usually I take it around 30 minutes, but कल थोड़ा सा like it stretched out up to 40 minutes also. So this is something I think which is kind of getting in flow, and we'll get more of information and धीरे धीरे इसको हम will build into something more of valuable. But for now, the goal is to come up every day and try to speak about things which I love and which can be valuable for you people also. So that is our whole aim. And अभी जो हम सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, अभी जो हम पेज पर हैं, दैट इज मोर अबाउट बुक डिस्कशंस. तो आज हम जो बुक डिस्कस करने वाले हैं वो ग्रेग लेविन, जो अगेन इज अ ग्रेट फिजियोथेरेपिस्ट, उनकी एक बहुत अच्छी बुक है, रिकवरी स्ट्रेटेजीज फॉर द पेन. एंड विल टॉक अबाउट दिस बुक एंड हम उसके अंदर थोड़ा सा उसके अंदर विल डीप डाइव डाउन एंड विल से कि कितनी अमेजिंग लाइक आई विल से एक्सेप्ट्स हैं और स्टेटमेंट्स हैं जो बहुत सिंपल एंड इफेक्टिव तरीके से यूज किया जा सकता है इफ यू आर इन अ क्लिनिकल प्रैक्टिस और इफ यू आर अ पेशेंट और इफ यू आर अ पर्सन हु इज एक्सपीरियंसिंग पेन राइट नाउ. So, saying that, this is day 11, and I'm Dr. Jatin. I'm a physiotherapist, and I live in Jaipur, Rajasthan. And yeah, we are doing this just to get hands on YouTube also, and starting as a content creation to more talk about all these things, right? Pain science, physiotherapy, fitness, wellness, and general exploration around the life. So this is whole everything about the channel itself. And प्लीज टू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू. एंड अगर आप इस वीडियो को अगर कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं और यू हैव वॉच द अर्लियर वीडियोस आल्सो, ट्राई टू पुट आउट सम कमेंट्स और सम फीडबैक सो आई कैन टेक दोस मोर ऑफ एज एन रिफ्लेक्शन, और मैं वहां से चीजों को और इम्प्रूव कर पाऊँ आप लोगों के लिए. सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड like please put out some comments so I can make it more better. Saying that, let's start with some screen sharing and then we can talk about the book itself. So give me a second, let me share the screen and then we can have a discussion. So I am starting with his Instagram handle. तो हम यहाँ से चीजें start करते हैं and we'll build up his like who is he and what work is like what he is doing exactly. So इनका एक बहुत अच्छा वीडियो है यूट्यूब पे, अगर आप जाएंगे मूवमेंट ऑप्टिमिज्म के नाम से. इफ आई कैन ओपन इट फ्रॉम हियर, आई डोंट नो. सो इनका एक अगर ये क्लिक करते हैं आप वेबसाइट के ऊपर तो यू विल सी दैट एक वेबसाइट विल ओपन एंड यू विल सी इफ यू ओपन दिस वन अगेन अराउंड मूवमेंट ऑप्टिमिज्म, देन उनका एक चैनल है ग्रेग लेमन करके मूवमेंट ऑप्टिमिज्म. एंड हियर यू सी लॉट मेनी वीडियोस अबाउट शॉर्ट वीडियोस और साथ साथ विद द लाइब्रेरीज एंड एवरीथिंग. सो दिस इज अ गुड रिसोर्स आई विल से. आप इसको एक बार विजिट कर सकते हैं एंड यू कैन सी दैट देयर आर मल्टीपल थिंग्स वेयर यू कैन गेट मोर ऑफ टॉक्स रिगार्डिंग मूवमेंट ऑप्टिमिज्म. तो बहुत हम देखते हैं हमारे आसपास जब हम पेशेंट हमारे पास आता है तो वो बहुत पेसिमिस्ट रहता है रिगार्डिंग द मूवमेंट इटसेल्फ और डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ मूवमेंट इन द पेन और इंजरी. उनको लगता है कि अगर हम मूवमेंट करेंगे तो और दिक्कत बढ़ जाएगी और ज्यादा प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाएगी, बट दैट्स नॉट द रियलिटी इटसेल्फ. हमको स्क्रीन करना इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज वेयर इज द पेशेंट राइट नाउ और उसके अकॉर्डिंग हमको अगर मूवमेंट ऑप्टिमिज्म को उसके लाइफ के अंदर वी कैन पुट हिम, we can give him an advice that it's not really bad to move. आप अच्छे से move कर सकते हो, there is no harm in that. And once you say that as a healthcare professional also, the person gets reassurance क्योंकि movement is central to everyone's life. Everyone wants to move, everyone wants to dance, everyone wants to walk. If you say that you cannot walk, you cannot dance, you cannot bend, you cannot lift, then you're taking a lot of liberty or independence from that person's life. तो आपको ये कोशिश करना है हमेशा एज अ फिजियोथेरेपिस्ट और एज अ पर्सन आल्सो दैट
you need to maximize person's movement capacity and physical function by any means possible. अगर वो भाग नहीं पा रहे हैं, उनको बोलो वॉक करें, वॉक नहीं कर पा रहे हैं, try to walk, say that walk around to one, like around your home itself or in your room, but try to add some of the movement, and that try to impart that learning that movement is not itself harmful. It should not be put like this. So one of the great person, I think, was talking about pain injury rehabilitation along with science based but always a pragmatic slant. So that's I really like about this guy. And if you see this Instagram page also, there is really great uh, post and videos around like different researches. If you're interested in research discussion, he's put lot many things about the his opinion on the researches and everything. So please do watch this. I think this space, I think this is really great. आप यहाँ पे जाके follow कर सकते हैं and you can learn about many things from this guy. So going ahead, let me go to the book itself, जहाँ पे we can see what has shared till now. So give me a second again. It's not showing up still. So yeah, now I hope everything is visible. आप वीडियो को देख पा रहे हैं and we are good to go. Okay, so ये रिकवरी स्ट्रेटेजी बुक है by Greg Lehman only. दिस इज अगेन, ये एक और बुक है जो मुझे बहुत पसंद है और मुझे इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है, अगर मैं आसान भाषा में बोलूं। एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, एक फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पे सीखते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चीजों को जानते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो प्रॉब्लम जिससे आप डेली डील करते हो, वो इशू जो हर एक पेशेंट या हर एक पर्सन आपके पास लेकर आता है, जो है पेन, अगर हम उसके बारे में थोड़ा और जान पाए, अगर उसके बारे में हम थोड़ा और समझ पाए, आई थिंक उससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती जो हमें मदद करेगी कि हम अपने बेस्ट कैपेबिलिटीज के अनुसार पेशेंट को हेल्प कर पाए। क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता कि हम पेन क्या होता है, वो किस पेन के बारे में बात करना है, क्या उसका फिजियोलॉजी होता है, किस तरह से हर पर्सन इंडिविजुअली एक पेन को एक्सपीरियंस करता है, जब तक हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते। हम अपने ही कुछ थ्योरीज और अपने ही कुछ बायसेस से उसको ट्रीट या फिर डिलीवर करने की कोशिश करेंगे कि हाँ ठीक है, आप आइए, मैं आपकी नीडलिंग करके देखता हूँ, उससे उससे कुछ आपको फायदा होगा। बट आप रियली कॉज पे जा ही नहीं रहे हैं। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि उनको उसको पेन किस वजह से हो रहा है, वो पेन क्या है उसके लिए। ठीक है, उसके लिए आपको सी यू कैन नॉट रियली ट्रीट, यू कैन नॉट रियली क्योर समथिंग। ठीक है, आप कभी भी एक इंसान के विदाउट हिज ओन फिजियोलॉजी वर्किंग, विदाउट हिज ओन, उसका खुद का जो अंडरस्टैंडिंग है, उसका खुद का जो बिलीफ है, उसका खुद के जो बॉडी की फिजियोलॉजी है विच इज अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स, उसका खुद का जो एक तरीका है टू लिव लाइफ, अगर आप उनमें चेंज नहीं ला रहे हो तो इट इज नॉट एन डेफिनेटिव इंटरवेंशन। ठीक है, सो अगर आप इन चीजों को समझते हैं जिनके बारे में हमने बात की अभी, लाइफ स्टाइल फैक्टर्स हो गया, पर्सनल फैक्टर्स हो गए, सोशल फैक्टर्स हो गए, पेन बिलीव्स हो गए, पेन परसेप्शन हो गया, मूवमेंट के अराउंड उसकी क्या, पर्सन की क्या ऑलरेडी सोच है, या फिर ट्रीटमेंट के अराउंड उसके क्या अपने बायसेस है, अगर आप इन सब के बारे में नहीं बात करते हैं तो आई थिंक यू आर, आप एक अंधेरे में तीर मारने की कोशिश कर रहे हैं, सिंपल एज दैट। सो बेहतर है कि हम चीजों के बारे में जाने, बेहतर है कि हम चीजों को समझे अच्छे से और उसके बाद हम अपनी डिसीजन मेकिंग पर आए, क्योंकि क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर डिसीजन मेकिंग इज द की। आपके पास हंड्रेड्स ऑफ पैटर्न्स होते हैं जब एक पेशेंट आपको प्रेजेंट करता है, आपकी खुद की एक लाइक एक बहुत वास्ट एंड डिटेल लाइब्रेरी होती है इंफॉर्मेशन की, आपको वहां से चीजों को निकाल कर पेशेंट के जो प्रेजेंटेशन है उसके उससे मैच करके बेस्ट वे पॉसिबल ट्रीटमेंट डिसाइड करना होता है। और यू नीड टू प्लान, यू नीड टू स्क्रीन, तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स। तो अगर आपके पास क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग नहीं है कि कब क्या कौन सी चीज कैसे देनी है, आई थिंक फिर वी आर नॉट डूइंग जस्टिस टू आवर प्रोफेशन इटसेल्फ। ठीक है, सो आई विल से
reading or understanding issues at the core gives us more power to make decision and do best for the person also who is coming to us for the care. So ये एक book again really great book, freely available है on the internet. You can DM me, I will send it to you. You can buy it also from the Amazon if you want to support Greg Lemon. But yes, this is ये फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में भी है, लिए भी है, ये पेशेंट्स के लिए भी है. मैं अपने बहुत सारे पेशेंट्स को ये बुक शेयर करता हूँ जिससे उनको ये समझ मिले, या अगर वो रियली इंटरेस्टेड हैं चीज़ों को जानने के अंदर, तो आई थिंक इससे बेहतर लाइक ये अच्छा रिसोर्स हो सकता है जिसके जिसके थ्रू चीजें स्टार्ट की जा सकती है. तो 4 पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट पेन के बारे में ही हैज मेंशन रियली अमेजिंग लाइक वर्ड्स एंड स्टोरीज, मेटाफर्स, एनालॉजीज, ये सब चीजें इन्होंने अच्छे से फर्स्ट पेन प्रिंसिपल वाले पार्ट में सेक्शन 1 के अंदर इन्होंने डाला है. सेकंड सेक्शन के अंदर इन्होंने की मैसेजेस जिसके अराउंड हमको अपनी कन्वर्जेशन, हमारा जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसको सराउंड हम कर सकते हैं, दैट इज अराउंड की सेकंड सेक्शन थर्ड पेन कंट्रीब्यूटर्स की असल में जो हमको पेन लगता है कि टिश्यू डैमेज से है, क्या वो असलियत में टिश्यू डैमेज से होता है, या फिर उसके अराउंड मल्टी डायमेंशनल चीजें होती है जो उस पेन एक्सपीरियंस को अफेक्ट करती है. आप अगर अपनी लाइफ को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे कि कोई भी आपकी लाइफ में जो मूवमेंट होता है उसका जो एक आप स्टोरी घड़ते हो अपने मन के अंदर कि अगर मैं एग्जाम में मेरे नंबर कम आए, उसके अराउंड जो आपका खुद का एक स्टोरी है, उस स्टोरी के वजह से आपका एक परसेप्शन क्रिएट होता है कि वो एग्जाम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, या फिर वो एक एक्सपीरियंस आपके लिए कितना थ्रेटनिंग और रिलीविंग है. ठीक है, एग्जाम इज एग्जाम, बट there are multiple factors which is making that exam more threatening or more easy for you. Same as that, अगर आप कोई पेन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस पेन के अराउंड क्या क्या फैक्टर्स प्रेजेंट है, उस पेन के अराउंड क्या क्या चीजें हैं जो उस एक्सपीरियंस को अफेक्ट कर सकती है, उन चीजों से आपका पेन बहुत ज्यादा मॉड्यूलेट होता है. एंड दैट्स वाई एक आसान एक सिंपल सा बैक पेन, अगर आपको एक जनरल बैक पेन हुआ है नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, आपने बाकी पैथोलॉजीज को स्क्रीन कर लिया है, देयर इज नथिंग एज एन ट्यूमर, इन्फेक्शन, ट्रॉमा, एनीथिंग अदर देन दैट, और आपको बैक पेन हो रहा है एंड यू आर नॉट रियली आइडेंटिफाइंग व्हाट आर द फैक्टर्स, चेक योर स्लीप, चेक योर जनरल रिकवरी, चेक योर वेलनेस. अगर आप दिन भर कुछ नहीं कर रहे हैं, दिन भर बैठे हैं, दिन भर स्ट्रेस्ड आउट है, आपका फैमिली जो सिचुएशन इट्स नॉट रियली गुड, योर वर्क स्ट्रेस इज हाई, you're not getting enough sleep, your nutrition is not good, and then you say that your back pain is caused by tight QL और आपका डिस्क बल्ज की वजह से आपको बैक पेन आ रहा है, नॉट जस्टिफाइड. ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट टेक केयरिंग ऑफ योर बॉडी इटसेल्फ. आप अपने जितने फैक्टर्स आप कंट्रोल कर सकते हो, आप डिस्क बल्ज जो आपको लगता है कि वो ठीक नहीं हो सकता है, truth is something else. Like researches show something else, that disc bulges can heal in long term follow, but आपको जो फील होता है कि आप वो नहीं कर सकते, उसकी वजह से यू विल फील मोर थ्रेटन्ड और मोर फियरफुल. बट क्या हम उन चीजों पे काम कर सकते हैं जो हमारे आसपास ऑलरेडी बिखरी हुई हैं? अगर आप उन चीजों पे काम करते हैं, डेफिनेटली विल गेट द रिजल्ट. एज अ थेरेपिस्ट ऑल्सो, इफ यू ट्राई टू वर्क ऑन द बिगर पीसेस ऑफ पजल which is already there in front of you and you don't ever talk about those things, that those things will give you more outcome than fixing the person's QL, tight muscle, weak muscles, whatever it is. So yeah, पेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स के बारे में बात करते हैं. देन लास्ट इज रिकवरी स्ट्रेटेजी. आप किस तरह से इन मैसेजेस को फॉर्म कर सकते हैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर, एंड हाउ यू कैन यूज दिस एज इन योर प्रैक्टिस इटसेल्फ. सो दैट इज ऑल अबाउट द बुक. इसमें 4 सेक्शंस के अंदर चीजों को बनाया गया है. एंड अगर हम कुछ की पॉइंट्स पे बात करें, हम आई विल नॉट डिस्कस द होल बुक इटसेल्फ बिकॉज इट विल टेक लॉट मच ऑफ टाइम, बट yep, we'll start with this point. Learning about pain can help promote healthy behaviors. एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ह्यूमन माइंड के लिए कि what you don't know you can't see, या फिर आप वो चीजें कभी नहीं देख पाओगे जो आपको पता ही नहीं है, आपने कभी उनके बारे में जाना ही नहीं है. ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इज ए हॉक्स. ठीक है, क्लाइमेट चेंज ए हॉक्स. इफ यू गो देयर, लाइक आप पोलर बियर से कभी रिलेट नहीं कर पाओगे क्योंकि यू हैव नॉट सीन द पोलर बियर ड्राउनिंग इन द
अंटार्कटिका रीजन, ठीक है, आप उससे कभी सिंपैथाइज नहीं कर पाओगे. यू विल नॉट सी दैट हाउ इट इज, हाउ द होल this pollution and everything is affecting our climate and the nature at the larger scale. Okay, जब आप वो चीजें समझते हो, then your behavior is affected. You will think about things more specifically. You will take decisions more with more of rationality. ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप पेन के बारे में जानते हो, एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, आई विल से आई हैव मोर ऑफ optimism around any injury or any pain if I have, because I understand things how my body can recover. मुझे पता है कि किस तरह से अगर मैं बाकी चीजों पर ध्यान दूंगा, अगर मैं अपनी बॉडी की जो रिकवरी और हीलिंग प्रोसेस है उसके ऊपर, if I trust and if I do things at the right time, I think there is no there is no harm in trusting yourself. ठीक है, and there is no benefit in fearing also. ठीक है, it will create more of problem itself. तो अगर आप पेन के बारे में जानते हो, अगर आप समझते हो पेन, इट्स नॉट अबाउट द डैमेज इटसेल्फ, इट्स नॉट अबाउट कि अगर आपको पेन हो रहा है तो वहां पे बहुत कुछ बहुत खराब हो रहा है, देन एंड यू हैव मोर पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग अबाउट पेन, दैट इट इज योर फ्रेंड, ये आपके प्रोटेक्शन के लिए है, ये एक इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है जो आपको सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है. इफ इट इज नॉट देयर, you will not be able to survive for long. Simple as that. As a species, as a human species, as a Homo sapiens, और कहीं भी अगर आप बाकी जानवरों की बात करें, pain is very 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 big motivator. ठीक है, it is kind of a thing which our body cannot avoid. ठीक है, अगर आपको कट लगता है तो आप उसको ओवरकम कर सकते हो आपके विल से, थोड़ा बहुत आप, people can do that, but you will feel that, you will feel how आप कितना उसको फील करो कितना नहीं करोगे, that depends on other factors, but it is there to survive, it is there to for your survival itself. अगर आप किसी गर्म चीज को छूते हो, sensations are taken from your receptors which are there outside. मल्टीमोडल रिसेप्टर जो होते हैं हमारे, चाहे वो बैरो रिसेप्टर्स है, चाहे प्रेशर को सेंस जो करते हैं, चाहे वो थर्मो रिसेप्टर्स है जो आपके गर्म या ठंडे को महसूस करते हैं, अगर उनके अंदर एक्सेसिवली कोई चेंज आता है उस रिसेप्टर्स के अंदर, यू विल फील पेन. ठीक है, आप जल्दी से उसको हटाओगे एंड यू विल फील दैट इट्स पेनफुल. देन व्हाट इज पेन एग्जैक्टली? क्या वो कुछ ऐसा कुछ स्विच है कि वहां पे हमने टच किया और आपको पेन फील हो गया, या फिर वो जो सेंसेशन है हमारे ब्रेन में जा रही है और वहां पे हमारे जो बिलीव्स है अराउंड दोस कंडीशंस, देन those things are causing us more pain. So yeah, we'll talk about things. If we talk in simple terms, what is pain exactly? So it is kind of, this is very very simple and specific definition: an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage or described in terms of such damage. अब अगर आप इसको एक एक करके तोड़ोगे, आई ऑलवेज लर्न दिस इन अ लेटर स्टेज ऑफ माय लाइफ, बिकॉज जो स्टार्टिंग का जो स्कूलिंग था, इट वाज एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, बट आई डिडंट गॉट एन अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से पढ़ना होता है चीजों को, अगर और समझना होता है चीजों को. आई विल से वन ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लर्निंग एज ए ह्यूमन और एज ए पर्सन. अगर आप किसी भी स्किल को सीखना चाहते हो, अगर किसी भी चीज को समझना चाहते हो, आपको उसको टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, आपको उसको ब्रेक्स में और पार्ट्स में क्रिएट करना होगा, एंड यू नीड टू जॉइन ऑल दोस थिंग्स टुगेदर टू मेक समथिंग अपीलिंग और मेक समथिंग मोर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, इंग्लिश एज ए लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज इन टर्म्स इज मेड अप ऑफ डिफरेंट वर्ड्स. अगर आप वर्ड्स को समझते हो, अगर आप वर्ड्स का मीनिंग समझते हो, तो आपके लिए एज ए ह्यूमन माइंड, इन योर ह्यूमन माइंड, यू कैन join them and you can form something more understanding. तो उसी तरह से अगर हम इसको break down करें, and pain is an unpleasant, it is not very good, sometimes you may feel very unpleasant when you have that sensory and emotional experience. That's what I was talking. Sensory मतलब कि आपको आपके senses के through it is getting traveled up to your brain or your mind, and it is an emotional experience. You're just like an anger, just like joy, just like fear, it's an emotional experience. ठीक है, emotional centers, amygdala, it's there, like you cannot pinpoint somewhere कि हाँ
ये है, दिस इज अ सेंटर इन अ ब्रेन कि यहाँ आपको पेन होता है, लाइक यू कैन नॉट पिन पॉइंट थिंग्स कि ये आपका पेन सेंटर है एक तरह से, बिकॉज दे आर मल्टीपल सेंटर्स इन योर ब्रेन विच आर एक्चुअली गिविंग दैट इमोशनल एक्सपीरियंस एज सच। मल्टीपल जो सेंटर्स है, आपके हिप्पोकैम्पस हो गया, आपका जो फ्रंटल लोब हो गया, आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हो गया, everything is involved and then it is giving you more of experience associated with actual or potential tissue damage. Now it can be associated with the damage, it cannot, sometimes it is not associated with damage also. So अगर आपको कोई कट लगता है, you are feeling pain, that may be because of that is because of the cut itself. लेकिन कुछ केसेस में जैसे फ्रंटल लिम्ब पेन बहुत एक इंटरेस्टिंग केस होता है, जहाँ पे जो एक एम्पुटेड लिम्ब होता है, जैसे किसी का हाथ कट गया, हाथ कटने के बाद भी उस इंसान को कुछ हद तक उसी जगह पर पेन फील होता है जो उसके पास अभी नहीं है, मतलब उसकी अंगुलियों के अंदर उसको अभी भी वहां उन अंगुलियों में पेन फील होता है, बिकॉज नाउ द पेन इज हैपनिंग इन दिस ब्रेन. ऑलवेज पेन इज ऑलवेज इन द ब्रेन इटसेल्फ, इट इज नॉट इन द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर से एक जो मैसेज होता है वो डिलीवर होता है, एंड देन आपके ब्रेन में उसका परसेप्शन या फिर उसका एक्सपीरियंस क्रिएट होता है. तो अगर वो स्ट्रक्चर भी कट जाए तो भी आपको पेन फील हो सकता है. दैट गिव्स अस मोर ऑफ होप, आई विल से, क्योंकि इट्स नॉट रिलेटेड टू टिश्यू डैमेज एग्जैक्टली. तो आप चीजों को और बाकी चीजों से भी कंट्रोल कर सकते हो. योर पेन इज मेलिएबल. दैट इज द वन सिंपल अंडरस्टैंडिंग आई वांटेड टू गिव फॉर दिस सेशन. आपका पेन एक्सपीरियंस कैन बी चेंज्ड by multiple factors, and that's what, as a therapist, my role is, and our role is, if you are a therapist, कि आपको वो उसका पेन का एक्सपीरियंस चेंज करना है थ्रू योर रिहैब. You need to make that person independent, you need to make that person more hopeful about his condition, that he can manage his pain, he can manage his own emotional or sensory experience in better ways, which is really possible. But हम क्या करते हैं, sometimes I really feel like very very different when people try to fear monger people, okay, because of their pain itself, which is their emotional experience, sensory experience, but we are demonizing that whole concept itself. I will say we can do better, and this is one of the definition I will say everyone should know, that it is an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage, or described in terms of such damage itself. So, yep, pain is not just about damage, it is a distressing experience associated with actual or perceived tissue damage with sensory, emotional, cognitive and social component. इतने सारे components होते हैं. Not only sensory part, इमोशनल, कॉग्निटिव, आपका जो थिंकिंग पार्ट है. अगर एक पियानिस्ट है और जो जिसके लिए उसकी अंगुलियां बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अगर अंगुली में चोट लगता है तो उसको ज्यादा दर्द फील होगा. उसका जो दिमाग कहेगा वो बोलेगा कि मेरा जो लाइवलीहुड है वो अब कैसे मैं कमाऊंगा, मैं अपने फैमिली की केयर कैसे करूंगा. तो उसके लिए वो पेन बहुत ज्यादा कंफर्टसम है, बहुत डिफिकल्ट है हैंडल करने के लिए. सोशल कंपोनेंट, उसके पास सपोर्ट कितना है उस पेन के दौरान. अगर आपने देखा होगा, आप जब बीमार पड़ते हैं तो अगर आपके पास लोग हैं तो बीमारी जो होती है बहुत, या तो बहुत ज्यादा फील होगी अगर आप अटेंशन सीकिंग पर्सन है, या फिर यू विल फील सपोर्टेड, बट इट कैन अफेक्ट योर कंडीशन इटसेल्फ. अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो अगर आपके बैक पेन है और आपके साथ कोई नहीं है, देन योर बैक पेन विल फील एज लाइक ए हेल, कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, एंड दैट इज मेकिंग थिंग्स मोर डिफिकल्ट. So yeah, this is very very amazing. If you want to learn about it, I am really like I will be really happy अगर आप ये book पढ़ते हैं कभी, or if it gives you more of difference in your life. But this is one of the book I think everyone should read, and you will have more understanding. So I will not talk more about in detail about detail, but yeah, nociception I will try to create some more different series around pain itself, because it really excites me, and I really think that it should come out as an smaller chunks, that people can understand what really it means to understand all these things. Okay, but I will create something else. This is just for the book issue, and we will not stretch it, क्योंकि ज़्यादा हम stretch करेंगे तो it will go in a kind of solo podcast. So I don't want to make it a solo podcast itself. But yep, so there are different metaphors, infographics, क्योंकि हमको stories, cartoons के थ्रू पढ़ना, I think it really makes sense. So there are multiple things here, and you can see this once, and you will see that, this is one of the good thing I always show my patients.
स्ट्रेस, टिश्यू डैमेज, फियर, वरी, लैक ऑफ स्लीप, जब ये सब कंबाइन होते हैं, जब आपके सारे स्ट्रेसर्स कंबाइन होते हैं, देन यू विल फील मोर दैट बिगर वेव ऑफ पेन इटसेल्फ. अगर आप किसी भी इन बाकी फैक्टर्स को कंबाइन करके अगर आप इन पे काम करते हो, यू विल फील मोर कंट्रोल्ड फॉर योर पेन एक्सपीरियंस इटसेल्फ. एंड देयर इज वन मोर, सी दिस इज हाउ यू वी जगल थिंग्स. हम इतनी सारी चीजें होती है जिसके साथ जगल करते रहते हैं, एंड देन वी फील दैट इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ आवर टिश्यू इंजरी, हमारा एसीएल इंजरी हुआ इसलिए हमको बहुत दिक्कतें आ रही है. बट आर यू डूइंग ऑल दीज थिंग्स रियली वेल इन योर अदर फैक्टर्स? Think about it. There's one more thing which I will share here, which is the yeah, pain is multidimensional, the overflowing club. Again, same concept कि आपके जो भी other factors हैं, physical stress is always there, fear of movement, joint changes, anxiety, depression, anger, work stress, social isolation, frustration, lack of support, false beliefs. ये जब आपका घड़ा भरता जाएगा, जिस दिन आपका घड़ा पूरा भर जाएगा, उस दिन आपको the overflowing cup will cause you more of pain, more of difficult pain to handle. अगर आप जैसे इन चीजों पे काम करना स्टार्ट करते हो, you will feel that your bucket is in control. Great. So I think we'll continue this book tomorrow and once again. So abhi hum isko zyada will not stretch this session, but I will say this is one of the good book you can always see, and you can always learn through this. One of the good resource which I always refer to when I want to see a patient and I want to give something meaningful to the patient itself. मैं इसमें से कुछ जो snippets होते हैं या फिर pictures होती हैं, I used to share with the patients also to make their pain little bit more accepting. And trust me, अगर आप लॉन्ग टर्म रिकवरी के लिए सोचते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके पेशेंट आपके साथ ट्रस्ट करें, आपको आपको मोर ऑफ एज ए केयर गिवर की तरह देखें, एज ए फ्रेंड की तरह देखें, एज ए सपोर्ट की तरह देखें, तो यू नीड टू गिव देम द रियल अंडरस्टैंडिंग. डोंट फियर, डोंट गिव देम द फियर मॉन्गरिंग, डोंट ट्राई टू फिक्स समथिंग कि हाँ मैं एक ऐसा राजा हूं कि मैं सब आई कैन एवरीथिंग फिक्स. नो वन कैन फिक्स एवरीथिंग. ठीक है, you need to give them understanding, you need to give them independence to manage their problems, you need to support them with the best of the resources available, and that's where they will grow, and that's where they will get the best outcomes in their rehab also. It's gonna take time, but the journey will be best if you try to make it easy for both of the persons itself, clinician also and the person itself also. आपको बार बार ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं आज क्या कपिंग करूँ या आज मैं नीडलिंग करूँ, आज मैं आईएसटीएम लगाऊं कि आज मैं आपको मशीन लगाऊं. These are really not effective as such giving the person more understanding itself. जब उसको हमको like I talked about this in the earlier session also. Sometimes people think oh these are the only options we have, क्योंकि बाकी सब लोग कर रहे हैं तो हम भी ये नहीं करेंगे तो पेशेंट को लगेगा कि ये तो हो ही नहीं रहा, तो फिर ट्रीटमेंट किस बात का. That is where we are lacking as in a communication. We are not able to communicate that interest of that interest of the person's well-being itself, that it's for you. We have better options from other than that, and now you choose. अगर आपको ये करना है, it's all okay for me also, but it will not give you benefits what is needed in your condition. People are always selfish, so they will take the what is best for them. Don't overthink about things which do not matter at all. Do your thing, do right things, whatever seems right, but see around once that. And as I said in the initial session also, what you don't know, you will not able to see. अगर आपको पता ही नहीं है, आपको यही नहीं पता कि पेन क्या होता है, आपको ये नहीं पता कि मुझे ट्रीट क्या करना है, तो आप फिर how you will give the best of your clinical decision making. So yep, this is a book I think you can read, you can go through with this, and we'll come again tomorrow and we'll discuss about this book itself, because यहाँ से हम बहुत चीजें और सीख सकते हैं. And hopefully in the future I will create something around this pain physiology and how to make it more accessible to the general public in an Instagram friendly way or YouTube friendly way. This is kind of a session, so यहाँ पे I think there is only one viewer right now who is sticking around, but it will grow, and it is very like I will say more of long stretch sessions, so it is not for everyone. But I will create some both of content, like more of these kind of session also, or short content also, जहाँ से हम हमारी जो बात है we can put it to more of people, and we can make more life understanding and easier for everyone. Okay, so take care, have a great day, and thanks for listening. And
We'll meet again tomorrow. Tomorrow will be day 12, and we'll go like continuously after 30 days also. So don't worry about it. We'll make something great, and this place is going to grow. So stick with it here, and do subscribe the channel, and just put some comments if you have for feedback or any reflection around the topics we discussed today. So take care. Bye bye. See you.